Di Nepal, anak-anak dengan HIV positif seringkali ditolak masuk sekolah. Karena stigma dan informasi yang tidak tepat, sekolah ketakutan untuk memasukkan mereka ke sekolah. Untuk mengisi kekurangan tersebut, sebuah sekolah swasta dibangun khusus bagi anak-anak dengan HIV positif. Sekolah ini adalah Sekolah Safalta HIV Shiksha Sadan. Sunil Nyapane melaporkan dari Kathmandu. Ini awal rutinitas pagi anak-anak di tempat penampungan dan sekolah bagi anak-anak ODA. Sarapan dan lalu obat antiretroviral. Urmila sedang tidak ingin bermain hari ini. Tadi malam ia bertemu ibunya dalam mimpi. Jadi dia ingin menulis surat untuknya. Ibunya tinggal di luar ibu kota Kathmandu yang jaraknya sekitar 600 km. Ia hanya bertemu sang ibu setahun sekali. मेरो बुवा दिल्ली जानुभयो दिल्लीबाट एचआईभी सारे मम्मीले सार्नुभयो म चाहिँ पेटभित्रै थिएँ मम्मीबाट मलाई सार्यो त्यसपछि एचआईभी मलाई भएको. Ia tak pernah bercerita soal ini pada orang lain. Tapi saat duduk di kelas 1 di sebuah SD negeri, ia diminta keluar. म चाहिँ सानो थिएँ पछि मलाई स्कुल पढ्ने बेला चाहिँ मलाई स्कुलमा सबले सोध्थे तैँले तिमीले के को औषधि खान्छौ भन्थे मैले भन्थेँ एआरबी चाहिँ भन्न नहुने नि त्यो भनेपछि स्कुलबाट त्यो पठाइदिनुहुन्छ त्यही भएर मैले भने सिटामोलको औषधि खान्छु जहिले पनि त्यस्तो झुट बोली खान्थेँ. तल त एचआईभी लाग्छ त किन यहाँ पढ्छ अब फेरि हाम्रो बच्चाले पनि यहाँ पढ्ने बच्चाले पनि एचआईभी सर्छ भन्नुहुन्थ्यो. म स्कुल गएको थिएँ म दाइ थियौँ त्यही बेला भन्नुभएको त्यो सर प्रिन्सिपल सरले. Sejak itu Urmila tak mendapat kesempatan bersekolah. Saat Raj Kumar pun dan Uma Gurung membaca kisahnya di surat kabar lokal, mereka memujuknya untuk datang dan tinggal di tempat penampungan yang sekaligus sekolah mereka. Sepuluh anak tinggal di tempat penampungan itu, mulai usia 3 hingga 10 tahun. All student leave application के भन्छ के एउटा चिठी लेख्नु भनेको छ हैन हामीलाई कसलाई टिचरलाई हो. Dataram Rai meninggalkan pekerjaan lamanya untuk menjadi relawan guru di sekolah ini. उहाँले खोल्ने लक्ष्य राख्नु भएपछि म पनि यहाँनिर इन्भल्भ हुन पुगेँ. म पनि अर्कै उमा गर्थेँ अनि त्यसपछि उहाँ त्यो अर्को अफिसलाई चाहिँ छोडेर म पनि यतितिर लागेँ. हजुर अब यो भनेको चाहिँ जुन एउटा समाज सेवा अब एउटा जुन एचआईभी पीडित हाम्रो जुन समाजले हेला गर्ने जुन अहिले हाम्रो समाजले अति नै हेला गर्ने भएको नाताले गर्दा यसमा चाहिँ लाग्नु चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले म पनि यसमा लागेँ. अब जे बच्चाहरूलाई पढाउनु पाएको छ जुन सेवा गर्नु पाएको छ त्यसमै सन्तुष्ट छ. Ini sekolah pertama untuk anak-anak dengan HIV positif di Nepal. Raj Kumar pun 28 tahun adalah pendiri sekaligus kepala sekolah di sini. उनीहरूलाई औषधि उपचार गरिसकेपछि कीर्तिपुरमा रहेका निजी तथा सरकारी विद्यालयहरूमा पठन पाठनको लागि हामी निकै आग्रह गऱ्यौँ. तर पनि उहाँहरूले हाम्रो कुरालाई सुन्नु भएन र बुझेर पनि बुझ पचाउनु भयो र कतिपय स्कुलहरूमा त यसरी एचआईभी सङ्क्रमित बालबालिकाहरूको आगमनले भरानाले गर्दा उहाँहरूको आफ्नो व्यवसाय घट्नेसम्म पनि उहाँहरूले ठोकुवा गर्नुभयो. यस्ता बालबालिकाहरूलाई भर्ना गर्यो भने त अरू गार्जियनले थाहा पाउनुहुन्छ र अरू बालबालिकालाई निकालिसकेपछि हाम्रो स्कुल जस डुब्छ स्कुल शून्य हुन्छ भन्ने किसिमको भनाइहरू गर्नुहुन्थ्यो. Untuk membiayai sekolah ini, Raj Kumar menjual rumahnya dengan harga sekitar 340 juta rupiah. Mereka harus membayar sewa rumah yang mereka tinggali saat ini sekitar 2 juta rupiah per bulan. Ia khawatir dengan masa depan mereka. अब अहिले हामीले जुन बसिरहेको घर पनि बिक्री गरिसकेपछि अहिले भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ र भाडा तिरिसकेपछि पनि अब जस्तै अब यो घर किन्ने मालिकलाई त अब चाहिन्छ र अर्को घर हामी खोज्दा पनि निकै जटिल छ. एचआईभी भन्ने बित्तिकै घर भाडा पाउँदैनौँ र अब यो 10 जना त एउटा उदाहरण मात्र हुन्. यस्ता जस्तै घटनाहरू धेरै छन्. एचआईभी सङ्क्रमित भएकै कारणले गर्दा स्कुलबाट निकालेका छन् र एचआईभीको औषधि खान नपाएर मरिरहेका छन्. त्यस्ता बच्चा ल्याउनु जुन हाम्रो चाहना छ र यदि
कहीँ कतै त्यस्तो किसिमको जग्गा मिल्यो भने हामीले चाहिँ शिक्षाको लागि भौतिक पूर्वाधार तयार गरेर अरू बच्चालाई पनि हामीले चाहिँ शिक्षा दिने एउटा ठुलो सोचाइ छ। नमस्ते, म मञ्जुचानमा बैतडीबाट आएकी हुँ। अहिले म Kehidupan Manjucat 10 tahun juga sangat berat. म सानै छँदाखेरि मेरो आमा बुवा बित्नुभयो। त्यसपछि मलाई केही पनि थाहा थिएन। अनि मलाई त्यति पनि तिम्रो आमा बुवा बित्यो भने मलाई त्यति पनि गाउँलेहरूले भन्थे। अनि मलाई त्यति थाहा थिएन। अनि त्यसपछि मलाई फुपूले दार्चुला लिएर आउनुभयो। मेरो शरीरमा एचआइभी रहेछ थाहा पाएपछि अनि त्यसपछि आफन्त र साथीहरूले पनि मलाई एकदमै घृणा गर्न थाल्नुभयो। उसँग एचआइभी उसलाई त एचआइभी छ न, उसँग नखेल अनि उसँग नजाऊ भनेर भन्थे गाउँलेहरूले पनि। उहाँहरूले त्यस्तो गरेको देखेर पनि तर मेरो मन त एकदमै रुन्थ्यो। Kakak perempuannya yang tinggal dekat sekolah juga tidak pernah mengunjunginya. दिदीहरू यही हुनुहुन्छ तर भए पनि के गर्ने, दसैँमा लिन आउनुहुन्न। अनि दसैँमा पनि लिन आउनु भएन। अनि यही सर म्यामको घरमा बसेको म। दिदीहरूले पनि खै अस्ति न त हामीलाई फोन गर्ने बेला पनि म लिन आउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो दसैँमा। अनि एचआइभी छ भनेर उता पनि घृणा गर्ने। त्यस्तो भएपछि अनि मलाई लिन नआएको। मलाई अब दिदीहरू लिन नआए पनि मलाई के छ, मेरो सर म्याम हुनुहुन्छ। अनि सर म्यामले खाना दिनुभएको छ, बस्न दिनुभएको छ। दिदीहरू नआए पनि केही छैन मलाई। अहिले दिदीहरू आउनुहुन्छ भने अब अरूकै हैसियत दिदीहरू आउनुहुन्छ मलाई यस्तो गर्नुहुन्छ भने तर मलाई केही लाग्दैन। मेरो त आमा बुवा भने पनि सर म्याम हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म ठुलो भएपछि सर म्याम जस्तै हामी जस्तो बच्चाहरूलाई सहयोग गर्ने। Setelah sekolah, Urmila memimpin anak-anak untuk menari. Dia suka menari dan ingin jadi penari terkenal kalau besar nanti. Dari Kathmandu, Sunil Nyopane menyusun laporan ini untuk Asia Calling. Sebagai orang Korea yang tumbuh besar di Jepang, sutradara Yong Yang-hee dan keluarganya diperlakukan sebagai warga kelas 2. Mereka pun kerap didiskriminasi. Dia membenci ayahnya karena mengirim 3 saudara laki-lakinya ke Korea Utara, sebuah tempat yang digambarkan ayahnya sebagai surga. Seperti Yang, warga Korea di Jepang seringkali menjalani kehidupan ganda, separuh Jepang, separuh Korea. Dan politik memainkan peran penting dalam kehidupan mereka. Tapi perlahan perubahan mulai terjadi, baik di Korea Utara maupun bagi orang Korea di Jepang. Ikuti laporan selengkapnya bersama Rick Wasserman. Kelihatannya kehidupan sutradara film Yong Yang-hee penuh dengan kontradiksi. Dia tumbuh besar di Jepang. Sebagai orang Korea Utara, ini adalah sesuatu yang mewarnai seluruh hidup dan pekerjaannya. Dia terus teringat akan diskriminasi yang diterimanya. When I was much younger than now, I even couldn't get a part-time job like waitressing because of my identity, because of my Korean name. Diskriminasi terhadap orang Korea dimulai ketika Jepang menjajah Korea pada 1895 selama 40 tahun. Jepang banyak mengirim orang Korea ke Jepang sebagai buruh. Orang Korea dipaksa memakai nama Jepang. Tidak ada yang betul-betul paham berapa banyak orang Jepang yang keturunan Korea Utara. Yang menggambarkan soal masa lalunya ketika membuat film dokumenter Dear Pyongyang. Ini adalah cerita yang menyayat soal keluarganya yang terpecah belah akibat keberpihakan ayahnya kepada Korea Utara. During the 60s, about 70% of Koreans in Japan was the North supporters. And because at the time, South was the politically insecure military government and poorer than North, and also ignore about Koreans in Japan. But North Korea was the totally opposite. Meski tinggal di Jepang, spektrum Korea Utara telah meliputi Yang.
Ayahnya mengirim 3 saudara laki-laki Yang ke Korea Utara. Sang ayah meyakini kalau ia mengirim mereka ke surga. Kim Il-sung made a beautiful speech to the Koreans in Japan. You guys choose North Korea as your fatherland. We are going to give you the job and then education and the medical treatment and the houses, and then why don't you come to North Korea? That was also the beautiful direction. I mean, honey speech for the Koreans who had the worst statement. I mean, status. Worse than we say worse than trash. Janji Kim Il-sung akan surga sangat menggoda, sampai-sampai hampir 100.000 orang Korea dikirim ke Korea Utara. Sebagian di antaranya adalah anak-anak. Akibatnya, seperti ribuan Jepang Korea lainnya, dia kehilangan saudara laki-lakinya. Selama bertahun-tahun ada saja warga negara Jepang yang diculik oleh pemerintah Korea Utara. In my real life, at that moment, I really tried to hide my emotion. I tried to pretend I was totally okay. Pemerintah Korea Utara punya organisasi politik tak resmi di Jepang bernama GAKR. Ayah Yang adalah ketua GAKR. That's why my father couldn't quit. And my mom totally, sent a lot of boxes to support their daily life. Clothes and the book and then sugar and the rice and the medicine and then everything. Yang harus menerima kenyataan yang dihadapi keluarganya. Namun ia berharap situasi bakal berubah menjadi lebih baik di Korea Utara. Dalam 10 kunjungannya ke Pyongyang untuk bertemu kakaknya, yang mengamati ada perkembangan ekonomi di sana. North Koreans started to make money. Started to work by themselves. So it seems like totally the beginning of the China, of the market economy. Dengan begitu, banyak anggota keluarga yang disandera di Korea Utara. Nyaris tak mungkin membayangkan ada gerakan protes dari warga Korea di Jepang. Film pertama Yang, Homeland, adalah kisah tentang kehidupan keluarganya yang terbelah. Film ini dinominasikan untuk meraih Piala Oscar tahun ini. Tapi sekarang dia dilarang masuk Korea Utara. Tapi kata dia, itu tak mengapa, karena sekarang orang-orang Korea Utara di Jepang tak setakut dahulu. They really started to speak out. So after they watched my films, they said to me like, wow, we can talk about this. Is it okay? I mean, I kind of opened the door. So I really hate the taboo. Laporan ini disusun Rick Wasserman untuk Asia Calling dari Swedia.